Okay, so we have a really interesting webinar today. Yeah, We're gonna talk about the derivative trading. We're gonna talk about the Indian market, the stocks market, a lot of things that we're gonna review from the beginning of 2025 up until now. And we're gonna see some AI forecast about the market, and I think it's gonna be really interesting for the Indian investor. And I think we're ready to start like in a 1 minute or two. Because I still see some people joining. And Keshav, you're gonna yeah. translate and help us Yes, yes, today. yes. Yeah, sure. So hello everyone. स्वागत है आप सभी का आई नो फर्स्ट एंड चेन्नई के इस एक्सक्लूसिव वेबिनार पर, जहां पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे डेरिवेटिव ट्रेडिंग फ्यूचर्स के बारे में, और देखेंगे किस तरह से एआई की हेल्प से हम लोग स्टॉक मार्केट का जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी है उसको कैसे यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। सो एआई जो कि आजकल हर जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, बट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ये ऐसी चीजें थी जहां पर अभी तक एआई का इतना यूज नहीं हो रहा है। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आएंगे जो कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स है उन्हें फुलफिल करें। और आज उसी चीज पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरह से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके इन्वेस्टमेंट में अपनी जो भी हमें इन्वेस्टमेंट में किसी भी तरह की कहें तो मार्गदर्शन की जरूरत है, उस मार्गदर्शन को प्रोवाइड कराएगा हमें एआई। और साथ ही साथ फ्यूचर में भी अगर हम कोई ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से हम ले सकते हैं एआई की हेल्प से, आज हम इस सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो कुछ वेट कर लेते हैं, एक 5 मिनट्स का और लोग ज्वाइन कर लें, देन विल स्टार्ट। Um, let's start with the quick disclaimer that I know first daily market forecast do not provide personal investment or financial advice to individuals, act of personal, financial, legal, or institutional investment advisor, or individually advocate to purchase or sell any of the security or investment that they use in a particular financial strategy. All investing stock forecasts and investing strategies include this webinar are involved with risk and loss of some of all of your capital. Before purchasing any of the financial strategies discussed on this webinar, you should always consult with a licensed financial advisor. And I think we are ready. Okay, yes. I'm ready when you get ready. सो एक Go ahead. फॉर्मल या सो एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन आप सभी के लिए। सो मिस्टर यारोन एंड मिस्टर बैन इज हियर विद अस फ्रॉम आई नो फर्स्ट टीम। आई नो फर्स्ट जो है एक एआई बेस्ड रिसर्च प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जो कि इसराइल बेस्ड है। और जो भी टेक्नोलॉजी एआई के पास है वो यहाँ पर आयनो फर्स्ट में वो सारी ड्राइव हो रही है इसराइल से। सो और जितना भी आप लोग आज जो भी समझेंगे एआई की जो भी कैपेबिलिटीज आप देखेंगे इसमें यारोन सर और बैन इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। सो स्टार्ट करते हैं इस वेबिनार को एक डिस्क्लेमर के साथ कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हम अभी बात कर रहे हैं एआई की, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम पूरी तरह से एआई पे डिपेंडेंट हो जाए। हमें अपने रिसर्च का भी इस्तेमाल करना है। एआई की हम सिर्फ हेल्प ले सकते हैं कि हमारी कुछ हेल्प कर दे, हमें स्टॉक फाइंड आउट करके दे दें, बट एट द एंड किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है ये डिसीजन हमारा अपना होगा, एआई का कभी नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वेबिनार को। ओवर टू यू यारोन सर, प्लीज। Okay, thank you very much, Keshav. We prepared a very interesting webinar today. We are going to talk about the stock market, about derivatives trading. It's going to be, I think, a very interesting webinar when we're going to see how we can use deep learning
AI and artificial intelligence, not only for stock market trading, but also for derivative trading. We have several surprises today as well. And it's good to see so many people in the crowd. Please use the Q&A window if you have any specific questions. We will try to address all the questions during the webinar. I will start with introduction of I Know First. I Know First, we are AI company. We are based in Tel Aviv, Israel. Our main solution is a predictive algorithm that basically identifies the most promising investment opportunities on a daily basis. We are utilizing artificial intelligence, deep learning, artificial neural networks, genetic algorithm to predict the financial market and to identify investment opportunities every day. Our AI algorithm is generating daily forecasts for over 13,500 assets from different asset classes. Equities, ETFs, commodities, currencies, indices, with daily forecast for multiple timeframes, short-term, mid-term, and also long-term. This is a global solution. We are covering over 50 global stock exchanges around the globe, including the stock exchanges in the US, Europe, but also, of course, India. We are generating daily forecasts for over 1,500 Indian scripts from different categories, small caps, mid caps, and also large caps. So, एक formal intro I know first का. So I Yes, sir. वो प्रेडिक्टिव एल्गोरिथम्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो भी हमारे स्टॉक मार्केट में अवेलेबल होंगी वो स्टॉक्स हमें प्रोवाइड कराएगा एआई और उस स्टॉक के ऊपर हम अपनी रिसर्च लगा के हम अपना ट्रेड लेना चाहें तो ले सकते हैं। सो अब सबसे पहले कि एआई इस सारी जो भी स्टॉक सिलेक्शन की प्रोसेस है वो किस तरह से करता है और किन स्टॉक्स को ये प्रेडिक्ट करता है। तो अभी अगर हम बात करें तो ओवर 13,500 एसेट क्लास के ऊपर आई नो फर्स्ट अपने प्रोडक्शंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब एआई बेस्ड प्रोडक्शंस हमें मिलती हैं जिसमें डेली फोरकास्ट होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, ईटीएफ्स होते हैं, कमोडिटीज, करेंसीज, इंडाइसेस और सभी मिलते हैं लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम में। सो एआई बेस्ड रिसर्च है, एआई बेस्ड फोरकास्ट है 50 से ज़्यादा ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंजेस पर, और जिसमें अगर हम बात करें यूएस, यूरोप, इजराइल और एशिया के भी लाइक इंडिया और भी कई कंट्रीज के स्टॉक्स को जो है एनालाइज करके एआई अपनी प्रेडिक्शंस प्रोवाइड कराता है आई नो फर्स्ट के थ्रू। सो अभी अगर हम बात कर रहे हैं जब स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स के साथ फ्यूचर्स की भी प्रेडिक्शंस हमें मिलती हैं लाइक करेंसीज फ्यूचर, कमोडिटीज फ्यूचर, उसके बाद हमारे स्टॉक फ्यूचर, इंडाइसेस के फ्यूचर्स, इन पर भी एआई जो है अपनी प्रेडिक्शंस प्रोवाइड करता है। सो लेट्स सी, आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को कितना बेहतर बना सकते हैं। ओवर टू यू एरन सर। Okay, thank you. Okay, and if we are jumping for some interesting example to to demonstrate how the predictive algorithm works, here we can see a forecast. Ben, you want to talk about this short-term forecast? Yeah, we are seeing a forecast from the large cap category. As you can see, we have a large cap, mid cap, and small cap. And this one belongs to the 7 days. It means that the stock's supposed to rise in the following 7 days. This was generated on the 12th of March 2025 up until March 19. And we can see that those are the stocks that the algorithm suggests us to buy and hold for a long, for 7 days.
And we can see to the right the results of those stocks. As we can see, the return, for example, for VBL was almost 12%, while Jew Energy was almost 11%, a little bit above 11%. And we can see all the stocks that the algorithm suggested here. And we can also see is the benchmark in those days, in those 7 days, was standing about 0.82, while the INO first average, the average of the entire package, is standing on 5.96, almost 6%, which is quite remarkable for a 7 days period. Yes, and in the very same way, by using the Shunya platform, it's possible to receive on a daily basis the best opportunities for multiple time frames, for the short term, for the midterm, and also for the long term, based on your investment preference. If you are focusing on small caps, you can receive on a daily basis the best small caps, the best mid cap stocks, and also the best large cap stocks for each time frame. तो अगर हम बात कर रहे हैं एआई की, तो हम अगर किसी भी चीज़ का एनालिसिस तभी हो सकता है जब हमें उसके रिजल्ट्स पता हो। तो रिजल्ट्स कोई बताए उससे अच्छा है कि हम आपको रिजल्ट्स दिखा दें कि एक्चुअल में एआई ने क्या प्रेडिक्ट किया था और उसका रिजल्ट क्या रहा है। सो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर 12 मार्च को 7 डेज के लिए टाइम फ्रेम में एआई ने कुछ प्रेडिक्ट किया कि आप कुछ स्टॉक्स आपको दिखाए कि ये स्टॉक्स आप ले सकते हैं। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि वीबीएल ने जो है आपको 7 डेज में 11% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। वैसे ही जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इसके साथ ही आप अलग अपनी लिस्ट चेक कर सकते हैं। अडानी ग्रीन, सीजी पावर, अडानी ट्रांस, बीईएल, टाटा कम्युनिकेशन, पीआई इंडस्ट्री, हिंदाल्को, ये ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने 11 मतलब अगर हम बात करें तो 2% से लगा के तो 11% तक के रिटर्न हमें प्रोवाइड कराई है। एवरेज भी अगर हम देखें तो एवरेज में 6% के रिटर्न है। मतलब अगर इन सभी स्टॉक्स में आपने पैसा डाला होता तो आपको 6%, लगभग 5.96% के रिटर्न प्रोवाइड कराई थी। ये आईकेएफ की जो है रिटर्न है। और अगर हम बात करें बीएससी की, तो बीएससी ने उस टाइम पर जो रिटर्न दिया था वो 1.82% का दिया था। तो 7 दिन में आपको जो रिटर्न इंडाइसेस पे मिल रहा है उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा रिटर्न आपको इन स्टॉक्स पर मिलता है। तो इसी तरह के प्रॉमिसिंग स्टॉक्स आपको एआई फाइंड आउट करके दे देगा कि ये शेयर्स है जी, इनके ऊपर आप काम कर सकते हो। आपकी मर्जी है, आप इसके ऊपर काम करते हो या फिर आप एक नॉर्मल एआई समझ के इसको छोड़ देते हो और इसका इस्तेमाल नहीं करते। बट हाँ, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें अच्छे से अच्छे स्टॉक्स फाइंड आउट करके देता है। उन स्टॉक्स के ऊपर हम अपनी रिसर्च लगा सकते हैं। और अगर हमें ये डेली बेसिस पर हमें हर टाइम फ्रेम में 10 स्टॉक बाय साइड के, 10 स्टॉक सेल साइड के दिखाता है। तो हमारे पास 6 टाइम फ्रेम है और मल्टीपल एसेट क्लास, मतलब अलग अलग कैपिटल, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, हमारे पास तीनों ही कैटेगरी के स्टॉक्स हैं। हर एक टाइम फ्रेम में 10-10 स्टॉक होते हैं। हम उन्हें एनालाइज करते हैं और उसके बाद जो बेस्ट स्टॉक्स होते हैं उनमें से 5 से 6 स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बना लेते हैं। मिनिमम 3 दिन का ही प्रेडिक्ट करता है, इंट्राडे प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। तो मिनिमम 3 दिन की प्रेडिक्शन हमें एआई से मिलती हैं। और अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो 1 साल तक की हम इसके अंदर प्रेडिक्शंस देख सकते हैं फिलहाल के लिए। ओवर टू यू सर। Thank you. Okay, a quick introduction of the team. The predictive algorithm was developed by our unique R&D team that being led by Dr. Lipa Reutemann, INO-First co-founder and chief scientist, and an expert in the field of AI with over 20 years of experience from the Weizmann Institute of Science in Israel. And in our R&D team, we have PhDs, AI and machine learning experts. We have math professor from Tel Aviv University, and different employees with the background of data science, computer science, math, statistics, physics, and engineers. Ben Rubin is the head of our advisory services. Ben used to work for Bank Hapoalim, one of the leading banks
in Israel as an investment advisor. My name is Yaron Volger. I'm the CEO and co-founder of I Know First. I'm also lecturing at one of the leading universities in Israel. I'm an engineer with an MBA. Yes. So अगर हम बात करें आई नो फर्स्ट की टीम की, so yeah, last slide, yeah, answer. सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम उन टीम को मिलें जो कि आई नो फर्स्ट को ऑपरेट कर रही हैं, हम उनके बारे में जानें कि कौन वो शख्स हैं जिन्होंने इस एआई को बनाया है। तो डॉक्टर लीपा रत्ना, जो कि इस एआई का जितना भी आप जो भी स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, जो भी प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम्स इसमें लगी हुई हैं, इन सभी एल्गोरिदम्स को बनाया है डॉक्टर लीपा रत्नन ने। और साथ ही एवं सर हमारे साथ इस टाइम कॉल पर भी अवेलेबल हैं, जो कि इस आई नो फर्स्ट के को फाउंडर हैं। साथ में मिस्टर बैन है जो हेड ऑफ एडवाइजरी है, और साथ ही आई नो फर्स्ट की एक पूरी बैकएंड टीम जो कि आपके लिए डेली बेसिस पर बेस्ट प्रॉमिसिंग स्टॉक्स की जो आपको प्रॉमिसिंग स्टॉक्स प्रोवाइड कराती है, जिनके बेसिस पर आप अपनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी प्लान कर सकते हैं। ओवर टू यू आंसर। Thank you. The I Know First predictive algorithm is being trusted by the world's leading hedge funds, investment houses, banks, family offices, and also brokerage firms, as well as retail clients from all over the world that utilizing the AI algorithm in order to identify opportunities on a daily basis in the market. In this list, you can find leading hedge funds, leading banks, leading family offices, and also investment houses. With several investment houses, we have also built AI power investment products that are being listed in different stock exchanges around the globe. सर यस। सो अगर हम बात करें क्लाइंट्स की, तो मोस्टली होता है कि कौन वो लोग हैं जो कि आई नो फर्स्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो एक नॉर्मल, अगर हम किसी इंडिविजुअल की बात करने से अच्छा है अगर ऐसे फर्म्स की बात करें जो कि आई नो फर्स्ट का यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी करती हैं। सो नेशनल बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ अमेरिका, फिनवेशिया, सी कैपिटल, टोटल कैपिटल, कैपलर, मिताओ एक अपने आप में एक ऐसी फर्म है जो कि एआई बेस्ड म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करती है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। सो ऐसे रिनोड नेम जो कि वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूशंस हैं, वो यूज़ कर रहे हैं आई नो फर्स्ट को। साथ ही बहुत से हेज फंड, इन्वेस्टमेंट हाउसेस, कई तरह के एएमसीज, बैंक्स, फैमिली ऑफिसेज, ब्रोकरेज फर्म और कई सारे एचएनआई क्लाइंट्स जो हैं वो आई नो फर्स्ट का यूज़ कर रहे हैं। यही आई नो फर्स्ट आप शिव ऐप पर भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी इनसाइट प्रोवाइड कराएगा, और साथ ही आपके लिए नए प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी आपको फाइंड आउट करके देगा। ओवर टू यू आंसर। Yeah, the AI predictive algorithm has received several awards from different entities around the globe, from UBS, from the Geneva Wealth Tech Forum, from the Entity Data in Japan, and it's also, I know first is also being listed among the top global wealth tech companies for 2025. Yeah, here we can see several of those awards, including from different Indian entities.
सो आई नो फर्स्ट को जो है कई सारे अवार्ड से नवाजा गया है अपनी इस एक नई फाइंडिंग के लिए एआई का इस्तेमाल स्टॉक मार्केट में करके देने के लिए। एक्चुअली एआई बहुत तरह से मार्केट में यूज़ किया जाता आ रहा है। कभी आपको कोई एआई बेस्ड पोर्टफोलियो देखने को मिल जाएंगे, पर इंडिविजुअल अगर हम बात करें कि पर्टिकुलर किसी स्टॉक को रिसर्च करके बता देना एआई के हाथ में है, तो वो सिर्फ आप आई नो फर्स्ट पर ही देख सकते हैं। सो आई नो फर्स्ट को काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं। जिनेवा वर्ल्ड टेक से 2019 में अवार्ड मिला है। उसके बाद बंसिंगा से अवार्डेड है, यूबीएस से अवार्डेड है, वर्ल्ड टेक 100 2025 में द मोस्ट इनोवेटिव वर्ल्ड टेक कंपनी का अवार्ड भी एनो फर्स्ट को मिला हुआ है। और साथ ही इंडिया में भी एनो फर्स्ट को अवार्ड मिला है। मिस्टर बैन खुद इंडिया आए थे इस अवार्ड को कलेक्ट करने के लिए। सो ऐसी उपलब्धि जो कि हिंदुस्तान के मार्केट में भी बड़े बड़े एचएनआई क्लाइंट्स ने हासिल करी है आइनो फर्स्ट के बेसिस पर। और साथ ही साथ आइनो फर्स्ट जो है हमें मतलब शुरू से लेके एक आपको किसी भी स्टॉक का 15 ईयर्स का डेटा डंप, 20 ईयर्स का डेटा डंप को लेके और उसके बाद आपको रिजल्ट बताता है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में अपसाइड या डाउन साइड जा सकता है। सो इंडियन फिनटेक अवार्ड 2018 में आइनो फर्स्ट को अवार्ड मिला है। सो यहाँ पर आइनो फर्स्ट को सबसे पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में। ओवर टू यू आंसर। Okay, so basically we are offering to our clients two main solutions. On one end, we are providing daily AI-powered forecast for each market, including the Indian market. And with this forecast, it's possible to identify stock picks, identify opportunities in the Indian market, and also to utilize AI for derivative trading. And we are going to elaborate about that in this webinar as well. And it's also possible to use AI in order to build an investment portfolio by using artificial intelligence. On top of that, we have developed several systematic trading strategies that using our AI algorithm in a systematic way, and we have launched several products that utilizing those systematic trading strategies. The Aino first predictive algorithm includes three components. By utilizing the first component, it's possible to identify stock picks, the best scripts from the Indian markets, and investment opportunities. By utilizing the second component, it's possible to receive stock market intelligence that could be very important for derivative trading, to identify the direction of the leading indices, Indian indices, to identify leading sectors within the Indian market, and also to identify sectors and indices that we would like to avoid that might go down in the near future. And the third component that's also available within the Shunya app is the holdings. Basically, we are offering AI-powered investment and AI-powered prediction for each Shunya client, for existing portfolios of each Shunya client, and it's also available within the platform. Yes. सो एआई करता क्या है? सो एआई सबसे पहले तो एआई बेस्ड प्रेडिक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और साथ ही फंड मैनेजमेंट में हेल्प करता है एआई बेस्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बना के लीडिंग हेज फंड हाउसेस के लिए और फंड हाउसेस के लिए। सो अगर हम बात करें स्ट्रेटजीज की, तो स्ट्रेटजीज भी आइनो फर्स्ट बनाता है जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होती है। साथ ही साथ हमारी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। सो आप नेक्स्ट सो आइनो फर्स्ट की जो एल्गोरिदम है वो सबसे पहले आपके लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ के लेके आती है।
और उसके ऊपर अपने जो भी इंटेलिजेंस है वो लगाती है सेक्टर्स पे, इंडाइसेस पर, स्टॉक्स पर, कमोडिटीज, करेंसी, सभी चीज़ों के ऊपर। और फिर एआई पावर्ड पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन करती है और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन भी करती है। तो आपके जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है शून्य के ऊपर, उस पोर्टफोलियो का आप ऑप्टिमाइजेशन करा सकते हैं आइनो फर्स्ट के थ्रू। मतलब जो भी स्टॉक्स आपने ले रखे हैं उनके अंदर आने वाले टाइम पर क्या किस तरह का मूवमेंट होगा, वो प्रेडिक्शंस आपको आइनो फर्स्ट जो है आपको शुरुआत में बताता रहेगा। ओवर टू यू। Okay, so how we do it? In order to generate the daily forecast, our algorithm is collecting and relying on quantitative data sets that are coming from the entire financial market. We are utilizing an extensive amount of data sets that coming from different data set, different asset classes, the different equities market around the globe, but also data that coming from the commodities market, the currency market, the interest rate environment. Basically, we are digesting all the quantitative information and data sets that is available. We are adding the daily data to our database. We are managing database with historical data. And around the clock, the algorithm, the AI algorithm is learning from the new data, learning from the historical data, and also learning from the combined data. And on a daily basis, without any human intervention, the AI algorithm is building the complex network that exists in the financial market. There are thousands of correlation sets in the financial markets, and the AI algorithm is able to model those correlations and to build this complex network on a daily basis without any human intervention. And before each trading day, you are receiving the bottom line. You are receiving the daily forecast with the best scripts for the different time frames, for the short term, for the midterm, and also for the long term. So you don't need to be an AI expert. You are receiving the best opportunities for you by connecting to the Shunya platform on a daily basis. यस, सो अब बात होती है कि किस तरह से किया जाता है इस सारी प्रोसेस को। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल जो डेटा है वो सारा वेंडर से कलेक्ट किया जाता है। 15 साल के स्टॉक्स का पूरा डेटाबेस रेडी होता है और हर एक स्टॉक को 15 साल तक के लिए एनालाइज किया जाता है। और डेली बेसिस पर एल्गोरिथम इसी तरह से काम करती है। पूरा लर्निंग प्रोडिक्शन साइकिल है। अपने आप एआई खुद उन चीज़ों को समझता है, सीखता है और अपने आप को डेवलप करता है और अपनी प्रोडिक्शंस प्रोवाइड कराता है, रिजल्ट्स निकालता है और हमें एआई पावर्ड प्रोडिक्शंस मिलती है। प्रोडिक्शंस हमें 6 टाइम फ्रेम में अवेलेबल होती है, मिनिमम 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर। सो अब अगर कोई प्रोडिक्शन फेल हो गई है, जो एआई ने बोला था कि स्टॉक अपसाइड जाएगा बट वो डाउन साइड चला गया, तो उस चीज़ को कैसे क्या किया जाएगा? तो उन चीज़ों से भी एआई खुद सीखता है। और ऐसी अगर कोई चीज़ होती है जहाँ पर एआई ने प्रेडिक्ट किया था कि स्टॉक अपसाइड जाएगा बट डाउन साइड चला गया, तो उन चीज़ों से भी एआई एक सीख लेता है। ओवर टू यू। We are combining different AI approaches into one AI algorithm. We are utilizing deep learning, artificial neural network, genetic algorithms, and also supervised and reinforcement learning. And the main idea, the main goal of the predictive algorithm is to separate and to focus on the most predictable assets from each market, and specifically from the Indian market. So we are screening the entire Indian market, and we are focusing on the most predictable assets, most predictable scripts from the Indian market. And this is the baseline for each forecast that you will receive on a daily basis.
सो एआई की जो टेक्नोलॉजी है वो कटिंग एज डीप लर्निंग अप्रोच है। खुद से एआई सीखता है, अपने आप को स्केल करता है, और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स जो मॉडल है वो जेनेटिक एल्गोरिदम के थ्रू पूरा सुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग करके और अपने रिजल्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड कराता है। सो प्रिडिक्टिव जो प्रिडिक्शंस हैं वो सभी एसेट क्लास की होती है, कमोडिटीज, करेंसीज, स्टॉक्स, इंडाइसेस के जितने भी रिलेटेड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं उन सभी पे। ओवर टू यू। Yeah. So basically, on a daily basis, we are screening the entire Indian market, applying our technology to focus on the most predictable stocks, and then we are ranking the stocks in order to identify the best stock picks for each time frame. This is what you're going to receive every day. Every day, you need to connect to the platform, and you are receiving a live update. The algorithm have learned from all the changes in the market, in the Indian market, and identify the best opportunities that are relevant for today. Yeah. सो इंडियन स्टॉक मार्केट में एआई जो है स्टॉक प्रोसेस को किस तरह से करता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, प्रेडिक्टिव फिल्टर्स, सिग्नल फिल्टर, और उसके बाद आपको स्टॉक्स निकाल के देता है 6 टाइम फ्रेम्स में, और तीनों ही कैटेगरी में, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में आपको स्टॉक्स मिलते हैं, और ये स्टॉक्स डेली अपडेट होते हैं। आपको 10 स्टॉक्स हर टाइम फ्रेम में लॉन्ग साइड के लिए और 10 स्टॉक्स हर टाइम फ्रेम में आपको सेल साइड पे मिलेंगे, जिसमें आने वाले टाइम पर डाउन ट्रेंड आ सकता है या फिर आने वाले टाइम पे अप ट्रेंड आ सकता है। Okay, so how exactly the forecast look like? The forecast comes in the shape of a heat map. The green cells represent long position, while the red ones represent short positions. In each and every cell, we have two indicators that help us to focus on the best stocks. And those two indicators are, first one is the signal that you can see here. The signal gives us or represent the predictive movement of the asset or the standard price deviation of the asset, and it helps us to rank the entire investment universe from the highest signal to the left to the lowest signal to the right. And in that way, we can see which asset's supposed to go for long and which supposed to go for short, and what's the strength of each and every asset. The other indicator is the predictability indicator, which is a quite important one. This tells us how good the algorithm can actually read or predict the specific asset. It's a Pearson correlation measurement. It moves from -1 to 1 basically, but help for example, 0.0 represent a 50% probability that the asset will move to the predicted direction, while 0.5 represents 75% probability that the asset will move to the predicted direction. So in both cases of those indicators, we are looking for the highest values to focus on while we're picking the best stocks for each and every time frame. सो सबसे मेन क्वेश्चंस जो कि हमारे क्लाइंट्स का हमारे पास आता है कि हम इस डेली फोरकास्ट को पढ़ेंगे कैसे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक कितने स्ट्रॉन्ग है। सो दो तरह के हमें रेफरेंसेस मिलते हैं, एक होता है सिग्नल का, एक होता है प्रेडिक्टिबिलिटी का। इन दोनों के बेसिस पर ही हमें अपना डिसीजन लेना होता है। तो सिग्नल्स जो होते हैं वो अपर बैंड में रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रेडिक्टिबिलिटी होती है जो वो 0 से 1 के बीच में होती है। 0 का मतलब है कि स्टॉक का सिग्नल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, और 1 का मतलब है कि स्टॉक का सिग्नल के साथ 100% कोरिलेशन है। और यहाँ पर जितना क्लोज टू 1 हमें सिग्नल प्रोवाइड होता है, उतना ही हमारे लिए इजी होता है कि हम उस स्टॉक की प्रिडिक्शंस को कर सकें। तो अगर मान लीजिए आपको कोई स्टॉक 0.8 की प्रेडिक्टिबिलिटी के साथ मिल रहा है,
इट मीन्स कि 80% चांसेस है कि अगर बाय साइड बोला तो बाय साइड जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अगर यही वो 0.3 का है तो मतलब 30% चांस है कि वो ऊपर जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम इसका देखें प्रिडिक्टिबिलिटी साइड पे, अगर हम कह रहे हैं कि किसी की प्रिडिक्टिबिलिटी 0.1 है, मतलब 10% चांस है कि स्टॉक बढ़ेगा, और अगर किसी की प्रिडिक्टिबिलिटी अगर आपको पूरी 1 मिलती है, ठीक है, मतलब यहाँ पर 100% चांस है कि स्टॉक की कीमत में हमें बढ़त देखने को मिल सकती है। Yeah. And by the way, we see, please ask us questions through the Q&A option. We'll try to answer the majority of the questions during the webinar or at the end of the webinar. So please feel free to ask us through the Q&A option that you have in the bottom of the Zoom platform. Now we can see the Shunya platform and the INO first embedding in it. In this case, we can see that the dashboard is actually complex from a few things. The first one, of course, is the AI stock picks. In this case, the algorithm picks for us from the Indian market the best assets, the best stocks to invest in for a different time frames. We can see the time frames to the right. So if you're a short-term investor, you can just click on the 3 days, 7 days, or the 14 days and pick your best stocks. Or if you're a long-term investor, you can choose the 1 month, 3 months, and 1 year, and the algorithm will provide you the best stocks from the Indian market. In the same way, you can choose if you are interested in a large cap stock, mid cap, or small cap, and just by clicking on those options, you can switch between the screens. In this case, you have the large cap stocks, and to the right, you can see, of course, the signal and the predictability of the specific asset, and you can see the performance, the daily performance of this asset, and of course, it's available to trade this specific stock after seeing it in the algorithm screen. So you can feel free to use any of those options, and I'll talk about the other options after Keshav will translate this point. सो अभी हम लोग बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स की। सो मिनिमम 3 डेज की टाइम फ्रेम के लिए प्रिडिक्ट करता है एआई, इंट्राडे में प्रिडिक्ट नहीं करता है। आपको कम से कम 3 दिन का टाइम फ्रेम लेके चलना पड़ेगा। 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 1 महीना, 3 महीना और 6 महीना, ये एआई की 1 महीने, 3 महीने और 1 साल, ये 6 टाइम फ्रेम पे हमें एआई प्रिडिक्ट करता है। और यहाँ पर जो प्रोडिक्शंस है आपको देखने को मिल जाएंगी कि एआई तीनों ही लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों ही कैटेगरी के स्टॉक्स को प्रोडिक्ट करता है। और साथ में ओवर 1500 स्टॉक्स के प्रोडिक्शंस आप देख सकते हैं। टॉप 10 स्टॉक्स लॉन्ग साइड के, टॉप 10 स्टॉक शॉर्ट साइड के, डाउन साइड जाने वाले आपको देखने को मिल जाएंगे। रेस्ट स्टॉक्स के लिए आप नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग पेज रखे अपने स्टॉक्स चेक कर सकते हैं या फिर स्टॉक को सर्च भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप यहाँ से बाय एंड सेल भी कर सकते हैं। Over to you. Okay, we have another options here. As you can see, the main indices, of course, in the top, and we can jump through from stocks to indices, and in this case, you can see the best indices for different time frames. This is where the option trader can actually have a great benefit out of seeing the direction of each and every index in the different time frames. If it's 3 days, 7 days, of course, 14 days, and the longer time frames. But we're going to talk about that. But here you can find all the indices, the Indian indices that the algorithm actually suggests to go long. In the same way, you can get indices for short, but in this case, we are seeing the best indices from NSE to this specific days of a time frame of 1 month. Another feature that we have in the Shunya platform is the holdings one.
after buying the stocks and holding it, you can actually see what's the recommendation on it on your own portfolio. So after purchasing a stock, the signal and predictability is still available for you in the holding page, and you can keep and follow and know if the stocks is still good for a hold, or you might need to sell it. If it's the signal turns to red, you know that you have to sell the specific stocks. So this holding feature help us to actually follow our portfolio on a daily basis, and to know which stocks are good to hold and which one we have to sell. So that's also available in the Shunya platform. सो आपको आइनो फर्स्ट की स्क्रीन के ऊपर जो शून्य के प्लेटफॉर्म पर आप आइनो फर्स्ट के नैमिक पेज पे जाएंगे, तो वहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपके जो स्टॉक्स रिकमेंडेशन है उसके साथ ही आपको इंडाइसेस पर भी रिकमेंडेशंस मिलेंगे कि आने वाले टाइम पे कौन कौन से इंडाइसेस जो है अपसाइड या डाउनसाइड मूव कर सकते हैं। सो अगर हम बात कर रहे हैं इंडाइसेस की, अब यहाँ पे दो चीज़ें होती है, आपको स्टॉक्स के ऊपर रिकमेंडेशन दी है। फॉर एग्जांपल आपको कोई XYZ स्टॉक के ऊपर रिकमेंडेशन मिली है जो कि किसी ऐसे सेक्टर से आता है जो कि FMCG है, ठीक है। अब आपको सेम FMCG का अपना एक पर्टिकुलर इंडेक्स भी है, ठीक है, अपना सेक्टर है। FMCG सेक्टर का आपको इंडेक्सेस यहाँ पर दिखा रहा है कि इसमें भी अप ट्रेंड है। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको दो जगह क्लैरिफिकेशन मिल रही है, एक स्टॉक भी आपको मिल रहा है, एक इंडेक्स पे भी आपको क्लैरिफिकेशन मिल रही है, आप उसके अंदर अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। किसी बैंकिंग स्टॉक के साथ भी सेम कर सकते हैं। आपको बैंकिंग सेक्टर के ऊपर अपसाइड का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ आपको बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स भी अपसाइड का ट्रेंड दिखा रहे हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ पर कोई ना कोई इंटरनली आपको AI कुछ ऐसा देख पाया है जो कि हम नॉर्मल लोग नहीं देख पा रहे हैं, ड्यू टू हम दिक्कत ये आती है कि 5000 से ज़्यादा लिस्टेड स्टॉक्स हैं NSE और BSE के मिलाकर। अगर हम टॉप स्टॉक्स की बात करें तो 500 स्टॉक्स तो हैं जो निफ्टी 500 का पार्ट है। अब अगर हम रोज चाहें कि 500 स्टॉक्स पे हमें अपना एनालिसिस लगाना है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। पर हाँ, आपको AI जो है वो 10 स्टॉक ढूंढ के दे रहे हैं कि ये 10 स्टॉक्स हैं जो आने वाले टाइम पे अपसाइड जा सकते हैं, या ये 10 स्टॉक्स हैं जो आने वाले टाइम पे डाउनसाइड जा सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग उसमें पोजीशन देख लीजिए। आपको कोई यहाँ पर सेक्टर रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर दिख रहा है कि रियल्टी सेक्टर रेड हो रहा है, तो आप देख सकते हो अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई रियल्टी स्टॉक है, आप उससे आप कोई उसके अगेंस्ट पोजीशन दूसरी क्रिएट कर सकते हो। आप एग्जिट करना चाहो, अपना प्रॉफिट बुक करना चाहो, वो बुक कर सकते हो। किसी भी तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडाइसेस का जो आपको प्रोडिक्शंस मिल रहा है, और विद द हेल्प ऑफ AI स्टॉक स्पेक्स, जहाँ पर आपको स्टॉक के ऊपर भी रिकमेंडेशन मिल रही है। सेम AC में अगर आपको कोई ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं जो कि FO में भी है, डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट भी जिनके अवेलेबल है, तो उनका ऊपर भी आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स जो है वो प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, अब बात आती है हमारी एग्जिस्टिंग होल्डिंग की। जो हमारे पास हमने शेयर्स होल्ड करके रखे हैं उसका क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास जो शेयर होल्ड है उन शेयर्स का हम परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे वो शेयर कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। वो आप अपने होल्डिंग टैब में जाकर आइनो फर्स्ट पर आप अपनी जो भी एग्जिस्टिंग होल्डिंग है शून्य के ऊपर, जरूरी नहीं है वो आपने होल्डिंग आइनो फर्स्ट के थ्रू ही दी है, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग है उनके क्या सिग्नल्स है, क्या प्रेडिक्टिविटी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको कोई आप किसी स्टॉक में बड़ी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, आपको वहाँ पर पहले ही रेड फ्लैग दिखाई दे जाए AI के साइड से, और आप एक टॉप पर अपना प्रॉफिट बुक करें, बाद में आप देखें स्टॉक वहाँ से 25-30% करेक्ट हो गया है। अभी काफ़ी सारे केसेस में जब मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिखाया था, तब हमारे कई सारे स्टॉक्स के ऐसे केसेस हम देखे थे जो कि AI जिन पर रेड फ्लैग दे चुका था। एक अच्छी प्राइस पर हमें वहाँ से एग्जिट मिला, और उसके बाद जो है जब मार्केट करेक्ट हो गई, उसके बाद हमें नई एंट्रीज मिली, अच्छे प्राइस पर एंट्रीज मिली। तो ऐसी चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। वो एनालिसिस वाला पार्ट जो है उसको AI थोड़ा कम कर देता है। वो आपको स्टॉक रिकमेंड करके दे देता है, सेक्टर रिकमेंड करके दे देता है कि ये सेक्टर है, ये स्टॉक्स है जो आने वाले हैं
आगे जाकर अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप अपने रिसर्च लगाओ, अपनी स्टडी करो, और अगर जनता है तो आप उस स्टॉक के अंदर ट्रेड करो। ओवर टू यू भाई। All right, so those features are available also in the desktop platform or in your mobile app. By Shunya, you can trade and see all those features in the desktop and also in the app. And now I want to talk a little bit about the derivatives and trading using the AI. Of course, all of the stocks, I see some questions about the AI. All of the stocks and all of the indices and the suggestions that you see here are generated by an AI. It's without human intervention. The algorithm is actually scanning the entire Indian market and giving us the best stocks and indices for different time frames. So all is being generated by AI. In this specific screen of the indices screen, we can find all the main indices in the Indian market, and of course that could be very helpful for future and option trading. You can trade on the Nifty, the bank Nifty, the Nifty PSU, and other main indices that can be traded in future and in options. So you have all of those features in the indices tab that you can see right here. And in the near future, we also might have another tab for commodities and currencies, which option traders can also can trade on. So it's coming soon. It's worth waiting for. But in the meanwhile, the majority of the traders in future and options are actually doing it on the main indices, which are available in the indices tab. You can see even for different time frames, for 3 days, 7 days, and of course, this forecast is updated daily. So if you're a day trader, you can also see the index signal in the 3 days, and every day get an updated about this specific signal, about the specific index, and follow for the Nifty. And I'm going to show you some examples that happened in the last 6 months, how you can use in a very good way the indices forecast and actually trade on it in different directions. So this is about the future and the options that now available in the Shunya app. Yes. सो अभी डेरिवेटिव ट्रेडिंग का हम लोग कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं ये तो अभी मेजर इंडाइसेस जो है हमारे जो ट्रेड होते हैं निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज डेवलपमेंट निफ्टी मिड कैप निफ्टी सेंसेक्स बैंकेक्स निफ्टी नेक्स्ट निफ्टी ये ऐसे इंडाइसेस हैं जो कि हमारे ट्रेड हो सकते हैं। अब इन इंडाइसेस के ऊपर हमें एआई की प्रिडिक्शंस भी आ रही है। तो अगर हम चाहें हमें भी अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारे अकॉर्डिंगली आने वाले नियर टाइम मिनिमम क्योंकि 3 डेज का होता है स्टॉक्स जो है वो अप जा सकते हैं, मार्केट जो है वो अप जा सकती है। अच्छा यहाँ पर आप इसको दो तरह से ट्रैक कर सकते हो। आप देख लो आपको दिख रहा है इसमें निफ्टी बैंक ऊपर जाना है बोल रहा है, साथ ही साथ आपको बैंकिंग स्टॉक्स भी दिखा रहा है में, तो आपके पास डबल कंफर्मेशन होगी। आप दो कंफर्मेशन लेके जा सकते हो, पहला इंडेक्स का, दूसरा आप ले सकते हो स्टॉक्स का। आपको डबल कंफर्मेशन होगी। आप अपना फ्यूचर का अगर कोई ट्रेड लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, कोई ऑप्शन का ट्रेड लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो ठीक है, आप आउट द मनी ऑप्शन में काम कर सकते हो। बट अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको एट द मनी या फिर इन द मनी थोड़ा बहुत ऐसी ऑप्शंस में काम करना चाहिए। होता है आपको भी पता है कि जब मार्केट अपोजिट चल जाती है, जो आपने सोचा, ठीक है, आपने सोचा मार्केट बढ़ेगा, आपने कॉल लेना है ना, आपने कॉल ले लिया 2000 पॉइंट दूर का, 3000 पॉइंट दूर का, तो वहां तक कैसे पहुंचाओगे बाजार में? ठीक है, तो इसलिए थोड़ा पास की कॉल लेनी चाहिए, एट द मनी लेनी चाहिए, इन द मनी लेनी चाहिए। थोड़ा आउट द मनी ले रहे हो तो बहुत आसपास का ही लेना चाहिए।
ज़्यादा दूर का आउट द मनी कॉल ऑप्शन नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज इसमें आपका थीटा डिके होने मतलब टाइम वैल्यू डिके होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अभी वहीं अगर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर्स में, तो आपको निफ्टी के भी इंडाइसेस के फ्यूचर्स के ऊपर ये प्रोडिक्शंस प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ बीएसई जो मतलब बीएसई के फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट है, लाइक सेंसेक्स बैंकेक्स, उनके ऊपर भी आपको प्रोडिक्शंस एंड सिग्नल देगा, ये प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, ओवर टू यू। All right, so as we saw the indices, we have also an example for the stocks universe. In this case, we can see a forecast that was generated not long ago on 21 of March. We have the 5 best stocks to invest in. We see the signals, we see the predictability, and we can see the returns to the right. All the stocks have a positive return, as we can see here. It actually doesn't matter which predictability or signal you would choose, you would get a positive return. But the highest signals has highest returns usually. Again, the signals represent the predictive movement of the specific asset. As high as the value of the signal, the highest the stock's supposed to move. But again, we have to check the predictability. The value of predictability should be high as well, because this tells us how good the algorithm can actually read or forecast a specific asset. In this case, we can see the small cap universe for a 14 days time frame, and we can see the return to the right, while the benchmark actually moved down by 1.29%. The package average was around 3%, which is quite remarkable, having a positive return while the market goes down. तो अगर हम बात कर रहे हैं स्टॉक्स की और उनके परफॉर्मेंस की, तो 14 डेज के टाइम फ्रेम में 21 मार्च को जो प्रिडिक्ट किया गया था वो ये था कि स्टॉक्स एनएलसी इंडिया और एसएमएल इसूजू, ये जो उत्तम शुगर, ये ऐसे शेयर्स थे जिनके ऊपर प्रिडिक्ट किया था कि इनके शेयर्स अपसाइड दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 1% से लेकर 30% तक के रिटर्न दिखाई दिए, तो ये पॉजिटिव साइड में आते हुए। और अगर उसी टाइम का आप बीएससी का इंडेक्स देखोगे तो वो लगभग 1.3% डाउन था। तो ऐसा बाजार जो कि 1.5% के आसपास टूटा हुआ है, उस बाजार में लगभग 3% के पॉजिटिव रिटर्न एवरेज प्रोवाइड करा देना, तो ये ही कर सकता है। ठीक है, अभी एनएसईएल का जो स्टॉक था वो 30% बढ़ गया। तो हमें तो प्रॉमिसिंग स्टॉक देखना है, सब में थोड़ी ना एंट्री लेनी है। हमें अपने अकॉर्डिंग जो स्टॉक ऐसा लग रहा है कि जिसके अंदर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, उस स्टॉक के अंदर हम एंट्री ले लेंगे और उसी को ही हम ट्रैक करेंगे। तो हमारे पास हर टाइम फ्रेम में 10-10 स्टॉक होते हैं, जिसके अंदर से हमें मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपने 30 स्टॉक्स के ऊपर ही एनालिसिस करना है। आपको 5000 में से 30 स्टॉक ढूंढ के दे देगा एआई, उन 30 स्टॉक के ऊपर आपने अपनी रिसर्च लगानी है, और उस 30 में से आपको जो स्टॉक अच्छे लगते हैं, 3, 4, 5, 10, जिसमें में भी आप ट्रेडिंग करना चाहें, अपनी इन्वेस्टमेंट पोजीशन क्रिएट करना चाहे, कर सकते हैं। So how can we use all this AI in the Indian stock market? So we suggest you to use our service in this last month for the special webinar sale. In this price will not will be more available anymore. This is the last month that we are giving this special webinar sale, which includes, of course, the daily forecast that we saw, all the 6 time frames, the best picks from the Indian market. You get the large cap, the mid cap, and the small cap, of course, and the indices for derivative trading included in this specific package. And of course, the customized AI portfolio that we saw earlier. All of this you can get for 799 Indian rupee per month. This again is the last month that the price is gonna stay that low for 799. After that, the price is going up, so you can take advantage of this webinar sale in this specific month. And of course, you get all what we just saw in one package.
Also, in the future, it'll be of course a special package for the indices and derivative trading. So you can use this month and get all of the features that you see here in one webinar sale for 799 Indian rupee per month. In the future, we're going to have a different packages for derivative trading and stocks trading. So feel free to try it now before it's going to be changed in the future. And you can also use this QR code to get directly to the Shunya platform and get the special webinar sales. Feel free to do so now. सो Q&A सेक्शन में काफी सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो beta.shunny.com पर आप INO फर्स्ट यूज कर सकते हैं। INO फर्स्ट आपको beta.shunny.com पर अवेलेबल होगा। तो लिंक जो है आपको चैट में मिल जाएगा। सो चैट पर आप beta.shunny.com पर जाकर अपना INO फर्स्ट का एक्सेस ले सकते हैं। मैं इसमें आपको चैट में डाल भी देता हूँ। तो आप सभी लोग जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। जो भी शून्य यूजर्स हैं एक्सक्लूसिवली वही लोग यूज कर पाएंगे। सो अब अगर हम बात करें, आपको ये AI बेस्ड प्रेडिक्टिव एल्गोरिथम का पूरा पैकेज मिलता है 799 पर मंथ तक, जो कि एक्सक्लूसिव वेबिनार सेल है। आज ये आपको लास्ट टाइम मिल रहा है, नेक्स्ट मंथ से हम लोग इसके प्राइसेस रिवाइज करने वाले हैं। जो 6 टाइम फ्रेम पर ये आपको अवेलेबल है। AI बेस्ड डेली फोरकास्ट है। टॉप पिक्स फॉर ऑल ओवर इंडियन मार्केट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी के लिए एक होल सोल पैकेज। डेरिवेटिव में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, इंडाइसिस के ऊपर आपको फोकस मिलेगा और आपका जो होल्डिंग है उनके ऊपर भी आपको AI पावर्ड फोरकास्ट मिलेगी। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि आपको एक ऐसा AI बेस्ड एक रखवाला मिल जाएगा आपकी होल्डिंग का, जो कि आपको रेड फ्लैग बता देगा अगर किसी भी आपके स्टॉक के अंदर आने वाले टाइम में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो 799 पर मंथ पे आप INO फर्स्ट को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। ये लास्ट मंथ है जो आपको इस डिस्काउंटेड प्राइस पर INO फर्स्ट मिलता है। आप इसका यूज कीजिए, एक बार इसको इस्तेमाल करके देखिए। और जैसा मैंने आपको बताया, इसको यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सिंपल सी चीजें, इंडेक्स भी अपसाइड दिखा रहा है, उसी के से रिलेटेड स्टॉक भी अपसाइड दिखा रहा है, आप उसके अंदर एंट्री लीजिए। अपनी रिसर्च करवाते हैं, आपको भी लग रहा है कि हाँ स्टॉक में पोटेंशियल है ऊपर जाने का, आप बिल्कुल उसमें पोजीशन ले सकते हैं। 5000 स्टॉक को एनालाइज करके सिर्फ 30 स्टॉक आपके सामने पेश करेगा। Keshav, I think that you have a problem with your mic. We cannot hear you very good. Am I audible? Yeah, the sound is a little bit noisy in your microphone. I think. Wait. Am I audible now? Is it clear? Not clear yet, actually. Wait. Let me check. Yeah. Okay. Basically, this is one of the this is the only tool that's available that can help you guys to trade derivatives by using artificial intelligence, specifically in India. But this is only one use case. You can use it also to build a portfolio. You can use it also to identify opportunities among different asset classes. Small cap stocks, mid cap stocks, large caps, by utilizing the daily update. And it's a tool that actually being updated based on the market situation on a daily basis. Of course, there's a link in the chat that you can use to also get to subscribe to the service. You can see it in the chat right now.
Keshav, are you back with us? Yeah. Yes. Now it's clear. Yeah, Yes, much now it's better. Yes. perfect. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. So मैं आपको यही बता रहा था कि आपको एक पूरा होलसेल पैकेज मिल रहा है 799 पर मंथ में, जिसको आप यूज कर सकते हैं। एक महीने के लिए आपको इसकी पूरी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और ये सबसे लोवेस्ट प्राइस है इन द वर्ल्ड। इट्स एट जस्ट 799 पर मंथ। आई नो फर्स्ट इज कॉस्ट अराउंड $100 per month for the overseas market, but in India it's just 799 per month. It's just not completely 800 rupees. So सिर्फ 799 रुपए दे के आपको एक AI मिल रहा है जो कि आपके लिए बेस्ट स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकता है। तो डील बुरी नहीं है बॉस। या आप Um, स्कैनर yeah. से स्कैन करके अपना beta.shiny.com पर लॉग इन करके आप अपना आइनो फर्स्ट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और इसका यूज कर सकते हैं आने वाले अगले एक महीने के लिए। Yeah, so in this first part of the webinar, we saw some past predictions. In the second part, we're going to see a little bit more predictions, and we're going to talk about the future. Actually, we're going to talk about what happened in 2024 and in the end of 2024, in the beginning of 2025 up until now. And of course, we'll get a forecast. We're going to see a live forecast in the end of the webinar for the Indian market. So stay tuned with us. I just gonna review shortly some more examples from the last few days and months for the Indian market, what the algorithm actually generated. You can find it from different time frames and different asset classes. We can see the small caps universe here as well as the for 3 days, for 7 days, and of course I'll suggest you to watch the average returns compared to the benchmark in each and every table that we can see here. So every day the algorithm gives us the best stocks to be in for different time frames. In this specific example, we can see the 7 days time frames, and here we can actually see an example from 21 of March until the 4th of April. The algorithm gave us 5 stocks that we should invest in for 14 days time frame, and we can see that the average return of those stocks was around 3%, while the benchmark was negative 1.29. That was the 3 days, 7 days, 14 days. We can see another example for the 1 month from the large cap universe. Again, the algorithm chooses the best stocks to be in for different time frames. All you got to do is focus on the best predictability and the best signals and keep those stocks for the time frame that is just suggested. And in the same way, we can find a 3 months, even a longer time frames, not just a daily trading or a weekly trading. We can do it for like 3 months and even 1 year. In those particular time frames, we can find some really high predictability values, as we can see in those cases here. So try to focus on longer time frame actually when you can find highest values of predictability and signals. This is the ideal trading strategy that we actually suggesting. सो परफॉर्मेंस की बात करेंगे। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर 7 डेज की परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं तो थोड़ा हम पीछे की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ रेगुलेटरी चैलेंजेस भी होते हैं। हम लोग लाइव पर ज़्यादा बात कर नहीं सकते, लाइव प्राइसेस हम लोग सजेस्ट कर नहीं सकते कि यहाँ से स्टॉक का क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं। सो अभी अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी स्टॉक की, तो जब हम पुराना पिछला रिकॉर्ड देख रहे हैं अक्टूबर 2024 में हम देख रहे हैं, तो 7 डेज के लिए जो स्टॉक्स प्रेडिक्ट किए थे वहां पर आप देख सकते हैं कि रिटर्न 3% से लेके 17-18% तक के रिटर्न
आपको यहाँ पर देखने को मिले थे स्मॉल कैप स्टॉक में, और जिसमें बीएससी का जो रिटर्न था वो बिल्कुल फ्लैट था, सेंसेक्स का रिटर्न। और आप देख सकते हैं कि आईकेएफ का जो एवरेज था वो 7.5% का था। तो मतलब 3% से लेकर 17-18% तक की तेजी आपको स्टॉक्स में देखने को मिली थी। वहीं अगर हम बात करें 14 डेज के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर जो नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा था सेंसेक्स, वहीं आपको पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ आइनोफर्स्ट का मॉडल लगभग 1% से लेकर 30%, 30.5% तक की तेजी हमें देखने को मिली थी स्टॉक्स में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वहीं अगर हम बात करें 1 मंथ के टाइम फ्रेम की, तो यहाँ पर भी हमें जो जो अगर हम बात कर रहे हैं आइनो फर्स्ट की, तो यहाँ पर हमें 6% से ज़्यादा के रिटर्न देखने को मिले। और वहीं अगर हम बात कर रहे हैं सेंसेक्स की, तो वहाँ पर हमें 4% के रिटर्न जो है वो देखने को मिले थे। यहाँ पर हमें जो तेजी दिखाई दी है 1% से लेके 13% तक की तेजी दिखाई दी है। ये हम लास्ट 1 महीने की बात कर रहे हैं, 2 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक की, जहां पर आप खुद जानते हैं कि बाजार के अंदर क्या हालत थी। तो लास्ट मोमेंट पे मार्केट थोड़ा ठीक होने लग गया था, बट अदरवाइज तो बाजार जो है वो काफी नेगेटिव मूव में हमें दिखा रहा था लास्ट में भी। बात करें लास्ट ईयर की। All right. So I want to review a little bit what happened in the Indian market in the last 6 months. And we can see here the chart of the Nifty 50. We saw that was a really downtrend market, declining market from the beginning of October 2024. The Indian market went down pretty roughly. And we actually can see that and actually forecast that in many ways. One of them was if you were tuning to our webinars, you were able to see the forecast that we produced in the end of each and every webinar, and see that we actually suggested and said that the VIX, the Nifty VIX, was one of the leading indices in those forecasts, which represent volatility in the markets. We started seeing that from September, the mid-September, and then in each and every webinar, actually also from the 9th of October, we showed you in the webinars that the VIX is the leading indices, in those forecasts, and that represent volatility in the market. Also, we saw the Nifty GS Composite, which is representing the bonds in India. We also saw it on the top of the table. The Nifty itself was quite negative. We can see also in October in the webinar. This is our screenshots from our last webinars. We saw that the main indices, the strongest indices, are the VIX and the bond indices. And even in the 21 of November, we keep showing you that the Nifty VIX is being the leading indices, the leading index in this forecast, which represent volatility in the market. We also have PR1X here, as you can see, which is actually shorting the Indian market, which is pretty strong. If we're seeing a diverse index on the Nifty, we understand that is a downgoing trend in direction of the market. So just by listening to our webinars, you would know and see that the direction of the market, of the Indian market, in the last 4 to 5 months. But that's not the only way. But maybe I let Keshav translate before. सो अगर हम बात करें हमारे लास्ट जो जिस टाइम से हमने वेबिनार स्टार्ट किए हैं वहाँ से अभी तक की फोरकास्ट की, तो हमें सेल साइड के सिग्नल्स भी जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं आइनो फर्स्ट के थ्रू, जहाँ पर हमें स्टॉक्स को जो मतलब स्टॉक्स ऐसे जो कि आने वाले फ्यूचर में अपना डाउन साइड पोटेंशियल रखते हैं, या इंडाइसेस जो डाउन साइड पोटेंशियल रखते हैं। तो बिल्कुल टॉप पर अक्टूबर में हमें आइनो फर्स्ट से पता लगा था कि मार्केट जो है वो डाउन साइड मूव दिखा सकते हैं।
तो वहां से आप खुद जानते हैं कि बाजार में किस तरह की मूवमेंट दिखाई है। सो आपको एक लंबी दूरी की एक गिरावट आपको पहले प्रेडिक्ट कर दी गई थी। फिर अब सेक्टर एंड इंडाइसेस जो शो किए गए थे लास्ट वेबिनार्स में सितंबर में, वहां पर आप देख सकते हैं कुछ स्टॉक्स जो थे वो पॉजिटिव इंडाइसेस भी दिखाए गए थे, उनमें आपको एक तेजी दिखाई दी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमने 9th ऑफ अक्टूबर को प्रेडिक्ट किया था, जहां पर आप देख सकते हैं जो डार्कनेस है, जो ग्रीन कलर जो डार्क था वो फेड होता चला गया, मतलब बाजार के अंदर कमजोरी को दिखाता चला गया। आई नो फर्स्ट के आगे आने वाला जो मार्केट है वो थोड़ा कमजोर बाजार होगा। तो आप देख सकते हैं लाइट ग्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन में नहीं, मतलब आपको उतना पॉजिटिव नहीं दिखा पा रहा है जितना पॉजिटिव होना चाहिए। कमजोर सिग्नल हमें मार्केट से मिलने शुरू हो गए थे, कब से? अक्टूबर में ही। उसके बाद भी बाजार में जो है वो हमें लगातार डाउन साइड के मूव देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप देख सकते हैं अब सिग्नल्स जो हैं वो बहुत ही सिलेक्टिव आपको दिखाई देंगे इंडाइसेस के ऊपर। जो इंडाइसेस पहले इतने ज़्यादा थे, धीरे धीरे इंडेक्सेस कम होते चले गए, मतलब नवंबर में और मंदी का दौर हमें दिखाई देने लग गया कि आगे आने वाला टाइम भी मंदी का है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, so besides the webinar, we can also see in 1st of October that the majority of the Indian indices were in the bottom of our forecast. What we are seeing here is our world indices forecast, more than 175 main indices around the globe. And you can see in those different time frames, this is the 3 days, 7 days, 14 day, 1 month, and 3 months. You can see that a lot of the Indian indices were located on the bottom of each and every forecast and was painted red. We can see the Nifty PSU here, which represent the financial part of the financial indices in India. We can find the Nifty 500, the NSEE, and of course the Bombay Stock Exchange. We can see all of those are in the red part of the forecast for different time frames. This was in October 1st. फर्स्ट ऑफ अक्टूबर की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्सेस में हमें अपने जो इंडेक्सेस थे वो दिखा दिए गए थे कि रेड मार्क हो रहा है, मार्केट में तबाही आ सकती है। तो 1 अक्टूबर 2024 को ही आईनो फर्स्ट ने प्रेडिक्ट किया था, कर दिया था कि आने वाला टाइम जो है मार्केट के लिए थोड़ा टेंशन भरा हो सकता है। All right, moving forward to the beginning of 2025. If we're checking the Nifty, we saw a quick jump at the beginning of the year, right in 2025. But if you were checking our forecast, or even in the Shunya platform, you would see the Nifty, many of the Nifty indices were still painted red. As we can see here, this is the main indices from the January 1st, 2025. This is just a long forecast, so I cut it into half. This is the first part, and this is the second part. But we can see a lot of the Nifty and a lot of the Indian indices are in the red part of the forecast, as well as the S&P 500. By the way, we can also see it here. We can see the airlines company, which also went down pretty rough. We can find the Russell and many other indices like the Dow Jones as well in this specific universe. But I colored with yellow the Indian market, the Indian indices that was painted red. Although the market did jump at the beginning of the year, we can still see what happened right after it, while the market went down up until March. सो अगर हम बात करें 2025 के बिगनिंग की, सो बिगनिंग ऑन 2025 आपको मार्केट्स ने कुछ अपने अपसाइड के मूव दिखाए थे, जहां पर आप देख सकते हैं मार्क है। सो
मार्केट तो अपसाइड ज़्यादा था, बट अगर हम बात करें आई नो फर्स्ट की प्रोडिक्शन की, तो 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025 को आई नो फर्स्ट मार्केट पे पॉजिटिव बिल्कुल नहीं था। एज पर आई नो फर्स्ट एआई बेस्ड प्रोडिक्शन मार्केट ने डाउन ट्रेंड ही दिखाना था। वहां से भी आप देख सकते हैं मार्केट वहां से कितना ज़्यादा करेक्ट हो रहा है। सो ऐसा नहीं है कि अगर तेजी आ रही है तो भाई हम बोलेंगे तेजी आ रही है, तेजी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, उस स्टॉक का 15 साल का डेटा क्या कहता है, उस इंडेक्स का 15 साल का डेटा क्या कहता है कि क्या मार्केट ऊपर जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते हैं। ये चीज़ें एआई जो है वो आपको प्रेडिक्ट करके देगा। इसमें आपको एक रिसर्च मिल जाएगी, उस रिसर्च के बेसिस पर आप उन स्टॉक्स को और ज़्यादा अच्छे से इन डेप्थ स्टडी कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ पोटेंशियल है, ये कह रहा है ऊपर जाएगा, मुझे भी लग रहा है ऊपर जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर अपनी पोजीशंस ले सकते हैं। Yeah, so moving forward into April, we saw that there was a big drop after a little small recovery on March. Still, the market had a big drop at the beginning of April. And then from April, we can see that this specific date, April 7, we can see the big run that we have in the Indian market that looks really positive. And we can also see that in the forecast as well. In the Shunya platform, you can also see it. Those are the same signals and predictability that we see here appear on the Shunya platform. Here we can see the entire universe of the world indices, and we can see that in the 6th of April, before the market started moving up, the majority of the Indian indices were located on the green side of the map and actually leading the world indices forecast. I mean, the Indian market was looked pretty strong in those days from the 6th of April, while the rest of the world was actually kind of in the red zone of the map. The Yeah. Indian market was actually dominating the green side, and we're seeing from other clients that we have, hedge funds and investment houses around the globe that are moving money into the Indian universe. And because of this forecast, we can see that the Indian market are getting stronger and stronger. This is from the beginning of April. I remind you, before this big jump has occurred, the algorithm predicted that the Indian market will move up, and these features and this knowledge and let's say is this market intelligence is actually available for you now, guys, in the Shunya platform. So feel free to join us and get ahead of the market. So again, So this is, yeah, just to add, since the beginning of the year, we have seen huge volatility around in the US market due to the trade war and Trump's tariffs. And as you can see here, since the beginning of April, we started to identify that besides the Indian market is climbing to the top of the world indices heat map. And of course, in the top part, we see the volatility, the US volatility, the volatility for the US market. In the bottom that we don't see here, we have seen the US market. But as an alternative, we started to see that Indian market is starting to be a solid alternative, a solid global alternative, that this specific region, this specific market is going to actually benefit from the trade war. And as Ben mentioned, a lot of the investment houses and the hedge funds that are working closely with you starting to increase their exposure to the Indian market. And when we're discussing derivative trading or the idea to build a portfolio based on the AI, this is gold. This is really gold, because we see that while before the negative trend in the Indian market, there was a clear signal by the algorithm that we should basically avoid the Indian market or to short the Indian market. And
In the very same way, since the beginning of April, we started to see how strong the Indian market is, and this is the situation also right now, actually. Yeah, and we're going to see the forecast in a few more minutes. To you, Keshav. Keshav? All right, Keshav, I think I have some technical problems. Okay, I will translate. I really want to hear that. Okay. Next time I'm All going right, to so guys, translation. all of this information and all of these features are available for you in our webinar sale. Again, it's the last month we are suggesting this specific price of 799 Indian rupee per month. So use it because you're getting everything here. You're getting the daily forecast, you're getting 6 time frames, you're getting the March large cap, mid cap, small cap. You're getting the indices trading for options and futures trading, and of course the customized AI portfolio. All of this is available for this specific month for $7.99. After that, the price will be higher and it will be divided into 2 packages for derivative trading and stocks trading. So in this moment, you can actually enjoy all of these features in one webinar sales that we have here for 799 rupee per month. And of course, there is no commitment. You can test drive it for several months, for 3 months, for 1 month, for 2 months, and we're sure that you will see the immediate value on a daily basis, basically. Keshav? Keshav is back with us. Is back? Yes, yes, I think there is some network issue in the area. That's No why problem. I'm facing some network related I problems. have made a translation, don't worry. Yeah, yeah. Thank you. So yes, we are starting from here now. Yes. So 7th अप्रैल 2025 से अगर हम बात करें तो आपको मार्केट में एक अपसाइड का व्यू आना शुरू हुआ है और अभी भी मार्केट जो है अपना एक अप ट्रेंड दिखा रहे हैं और ये जो फोरकास्ट है 6 अप्रैल 2025 का आपकी स्क्रीन पर है जहां पर आपको इंडियन मार्केट्स जो है वो ग्रीन में आते हुए दिखाई दिए कि एक लंबे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर अब ग्रीन सिग्नल आपको देखने को मिल गए थे सो धीरे धीरे आप देख सकते हैं 3 डेज के टाइम पीरियड में भी आपको इंडियन जो इंडाइसेस हैं वो येलो मार्क से ग्रीन मार्क में आते हुए दिखाई दिए हैं और 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम में तो आपको सबसे ज्यादा ग्रीन निशान जो है वो हिंदुस्तान के बाजार पर ही देखने को मिलेगा सो 6 अप्रैल को फोरकास्ट और 7 अप्रैल से मार्केट में तेजी तो एक एआई आपको इतना सपोर्ट करवा सकता है और ये एआई आपको मिलेगा सिर्फ 799 पर मंथ पर एंड दिस इज द लास्ट मंथ व्हेन यू आर गेटिंग दिस एआई एट दिस प्राइस ओनली क्योंकि इसके बाद हम लोग प्राइस रिवाइज करने वाले हैं और फिर बढ़ी हुई कीमत पर आपको ये एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म जो कि आई नो फर्स्ट से मिलेगा इस 799 में आपको कमिटमेंट करते हैं आपको 6 टाइम फ्रेम में एआई बेस्ड डेली फोरकास्ट प्रोवाइड करेंगे लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरीज के स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे बेस्ट इंडाइसेस जिसके साथ आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर पाए और एआई पावर्ड फोरकास्ट ऑन योर होल्डिंग्स ये सारा पैकेज आपको एट जस्ट 799 पर मंथ एक आपकी चाय के खर्चे से भी कम खर्चे में आपको एक एआई मिल रहा है जो कि आपकी मदद करेगा आपको प्रॉमिसिंग स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में most promising stocks. Yeah, and you can join by scanning the QR code that you see on your screen that will lead you directly to the Shunya platform and to join the I Know First service on the Shunya app. So feel free to scan and join us with the
best stock picks for the Indian market. And just before we're going to see what's going to happen in the next month in the Indian market, we're going to just tell you we in I Know First, we have special forecast for every investment universe around the globe that is actually available from, of course, the US stocks that we can see here for different time frames to the world indices that we just saw that's actually telling us what's happening in the world and bring us artificial intelligence to the global markets. And of course, the commodity and indices forecast as well that might be available soon in the Shunya app as well for the option traders, the derivatives trading that is going to be available in the next few months. So this is also available for you guys in the I Know First website. Yes. सो आई नो फर्स्ट जो है, जैसे कि आपको पता है कि सभी एसेट क्लासेस में सभी 50 से ज़्यादा इंडेक्सेस पर और अदर स्टॉक एक्सचेंजेस पर अपने फोकस प्रोवाइड करते हैं। सो आप यूएस स्टॉक्स में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर भी आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जहाँ पर S&P 500 जो कि यूएस का सबसे बड़ा इंडेक्स है, उसकी अगर हम रिटर्न देखें तो 2.62%, और वहीं आई नो फर्स्ट की एवरेज देखें तो 7.8% की हमें देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें वहीं 13 अप्रैल के 7 डेज के फोरकास्ट की, तो 1.5% के रिटर्न S&P ने मैं I think we have trouble hearing Keshav again. Yeah. Um, Sometimes the weather is affecting the internet connection. I Yeah. still remember. It might be that. All right, but let's move forward to the future forecast by the algorithm. Let's see what he says about the next month in the markets. And we can see that a lot of the indices are actually green. So we can find here the Nifty mid-cap 150 is leading the forecast and has the strongest signal for this current month. We're talking about the next month. This is a live forecast that was taken from the Shunya platform. So we can see the Nifty 250. We can see the Nifty banks, NSE banks, looking pretty good. And the Nifty PSU, which is the financial sector in India, also looks quite positive. Usually, if the financial sector is positive, so the market are positive as well. We can see, of course, let's say the Nifty mid cap leading this forecast. We can see the Nifty 50 also positive. So in a general look, we are seeing that the Indian market right now is looking quite attractive, quite positive. The VIX is down in the red part of the table. So if the volatility is down, and we're seeing it also in the world indices forecast that we have, that the Indian market look quite positive. I think it's a great time to join the market. And after a long time of going down market, we can see that the Indian market is recovering and recovering quickly. So if you want to be on the right stocks and in the right indices, join us on the Shunya platform and get the best opportunities for different time frames. You can trade stocks, you can trade the indices, you can trade future or options. All is available on the Shunya app for all the time frames in a really special price. This price is not going to be available again. So use this webinar sale to purchase the I Know First service on the Shunya platform. Keshav, you're with us?
Am I audible now? I think there are some issue in our area. That's why Yeah, no uh, problem. I am able to uh, perform well. So अगर हम बात करें आज के इंडाइसेस के फोकस के, अभी आने वाले एक महीने में हिंदुस्तान के बाजार आपको नई ऊंचाइयों पर जाते हुए दिखाई देंगे। सब कुछ हरा ही हरा है और यहाँ से मार्केट से एक अच्छी तेजी दिखा सकते हैं। यस, अगर हम बात करें हिंदुस्तान की तो यहाँ कुछ हमें कुछ ऐसी चीजें हमारे देश में कल हुई हैं जिसका हमें बहुत अफसोस है। और एक एक टेरर अटैक हुआ है इंडिया में। सो उसकी वजह से अगर बाजार को कोई ऐसा है कि कोई एक्शन होता है जिसमें बाजार अगर उस तरह से परफॉर्म ना कर पाए जैसा भी परफॉर्म करना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। But yes, it's very sad for all world that this kind of terror attack uh, happens in our country. So heartiest condolence to all those uh, who lost their loved ones. So उस वजह से for that reason there might be some changes in the economy or some stress on the markets, but ओवरऑल मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो काफी हाई रहेगी। ओवर टू यू आंसर। All right. What happened here? Second. Okay. Actually, if it's already open, I wanted to show you something interesting just about from today forecast. This is the live forecast uh, from the indices forecast, and I just had a quick look at it and see what we can see in the head of the forecast. Indian markets in the short terms looks quite positive, really positive, not quite positive. We can see it actually all over the forecast. The Nifty is leading. Is this we have here 175 main indices around the globe. This forecast is from today, and the Indian markets leads the forecast. This is a really positive segment from the Indian market. So feel free to join the service and join the Indian market and get the best opportunities from it from the I know first algorithm service. Again, you can use the special webinar cells that we have, scan the QR code, sorry, and join the Shunya app. And I think one last thing, you can also join our WhatsApp group, WhatsApp community, while we giving a forecast and articles about AI. Feel free to scan the code and join our large WhatsApp community. And I think now we can actually answer some questions. I see a lot of questions. So let's, what do you say, Keshe? Let's answer some questions from the crowd. Yeah, sure. Let me translate this first about Sorry. this predictions. Yeah, then we start the question Q&A. सो आपको आने वाले टाइम पर इंडियन मार्केट्स जो है काफी पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे। और एज पर द आई नो फर्स्ट एआई अभी आने वाला टाइम जो है मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव दिखा रहा है। लेट्स सी आगे हम किस तरह की परफॉर्मेंस देखते हैं। स्टॉक्स आपको फाइंड आउट करके मिल जाएंगे एआई के थ्रू एट जस्ट 799 पर मंथ की कॉस्ट पर। और अगर हम बात करें तो आपके कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जिनके आंसर्स हमने करने हैं। तो उन क्वेश्चंस को ले लेते हैं एक बार। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पुट कर दीजिए, हम इसके भी रिप्लाई आपको कर देंगे। So yes, then we can take Q&A now. Great. So the first question that I would like to address, if I purchase today, then when I will be able to see the predictions? So
in the very same, once you subscribe, the predictions are going to be updated on a daily basis. And by logging to the account, you will be able to get the best opportunities on a daily basis. So feel free to join and to get the best opportunities for today and for tomorrow immediately. And then from that point, it's a monthly subscription without any commitment. So you can test drive it, as said, for several months and to see the value. ओके सो जो क्वेश्चंस हैं वो इस चीज से रिलेटेड है कि प्रेडिक्टिव डेली बेसिस की हैं यस डेली बेसिस बट Keshav, we cannot really Yeah, hear we you cannot that. really hear We you. can't really hear you that good. We tried नहीं to होती हैं answer यस some. वो इंट्राडे में परफॉर्म कर सकते हैं आपकी प्रेडिक्शंस आपको देखने को मिलती हैं और सब्सक्रिप्शन मॉडल एक 1 मंथ के लिए है पैकेज मिलता है हेलो Keshav, we cannot hear you really well, so we'll try to answer यानी some. सर am I audible now? Yeah, the audio is not that good. We'll try to answer the questions in English. And if the connection is stable again, we'll be happy to let you also join us. Is it working for day trading, for stock Nifty, Bank Nifty? Yes, I think Ben today showed us how to use it for derivative trading as well as for how to possible to use the AI also for stock selection and also for derivatives trading, including Nifty, Bank Nifty, and even more. As Ben said, in the upcoming weeks, we will also launch new services that include commodities predictions and also currency predictions, including gold and more. I can also see a question about the signal. A lot of people ask about the signal. What does it mean? So I'm gonna repeat that quickly. Again, the signal is one of two indicators that we use to choose the stocks or the indices. The signal represents the predictive movement of the specific asset, which means that it doesn't tell us in how much percent this asset will go up or down. It actually helps us to rank this investment universe from the asset that's supposed to move potentially highest to the asset that should move the strongest way in the downside. So, for example, in this universe that we see the indices, in this indices forecast, if we'll take, for example, the signal, we can see that the NIMI 150, the mid-cap Nifty 150 has the strongest signal, 197, and it goes down to the right, and we can see the NICPSE has the lower signal out of this universe. So we know that this one, the NIMI 150 and the NIMI 250 has strongest signals, strongest potential moving up. We can also find here the Nifty PSU, the financial service in India, with strong signal, but the predictability is a bit lower than the other. I remind you, we are looking for high signal and high predictability for ideal investment. So try to find assets that has high predictability and high signal. This combination is the best to invest in. And of course, you have in the Shunya platform an explanation about the signal and the predictability. Let's see some more questions. Is it working intraday? You can use it for intraday because the forecast is updated on a daily basis. I mean, every day you get the 3 days forecast. So basically, you can have it on a daily basis. You get every day the forecast for the assets, so it can work on a daily trading.
What else? What else? What else? We have a lot of questions here, but I think that we answered the majority through the webinar itself. Let's see. Exit strategy. Well, basically, after joining the stocks or buying the stock, you should look at the relative time frame that it belongs to. So if you'll see a stocks for in the 1 week, you're supposed to hold it for 1 week. But also, if it appears on the 2 weeks and 1 month, you can keep holding it to the longer time frames. The time frames are the exit points for you guys. And only in the Shunya platform, you also have the portfolio, I mean the holdings that you can actually follow and see if the signal goes from green to red, it means that you should sell the specific asset. The algorithm does everything for you, so it's pretty easy trading through the Shunya app. अगर हम आज बात करें आज के वेबिनार की, तो आपको सॉरी कुछ मेरी साइड से डिस्टरबेंस हुआ ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज, बट फिर भी होप सो यारोन सर एंड बैन विल आंसर योर ऑल द क्वेश्चंस जो थे वो रिलेटेड थे इंट्राडे से कि इंट्राडे पर सिग्नल्स या प्रेडिक्टेबिलिटी मिलते हैं या नहीं, इंट्राडे के लिए नहीं, 3 डेज टू 1 ईयर के लिए 6 टाइम फ्रेम में मिलते हैं, और सब्सक्रिप्शन मॉडल मंथली बेसिस पर है। इन फ्यूचर हम कुछ डिफरेंट सब्सक्रिप्शन मॉडल्स भी लेके आएंगे। अभी हमने सबसे लीस्ट प्राइस पर ही रखा हुआ है, और इट्स जस्ट 799 पर मंथ होलसेल पैकेज, और आप इसका यूज कर सकते हैं अपने स्टॉक रिसर्च के लिए। इन्वेस्टमेंट एक आपका इन्वेस्टमेंट फ्रेंड ये आपके साथ बन के चलेगा, जो आपकी हेल्प कराएगा। और साथ ही साथ आपको आपके कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू जो आपको दिक्कत आ रही है। अगर आप नहीं सब्सक्राइब कर पा रहे हैं, मैं चैट में अपना मेल आईडी मेंशन कर देता हूं। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है जो कि आपकी पेमेंट से या किसी भी चीज से रिलेटेड है, तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। मैंने अपना मेल आईडी जो है वो चैट बॉक्स में रख दिया है, आप वहां से मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। और I think most of the questions Yaron sir and Ben you have answered, so it's all it's good for today now. Yes, thank you very much, Keshav. Yeah, more Thank you everyone, thank you all the attendees जिन्होंने हमारे इस वेबिनार को अटेंड किया, and thank you so much Yaron sir and Ben to provide this kind of tool to the market, which can predict earlier what is going to be happen in the market. So it's a very good thing that on 6th of April, I know first is predicting there would be uptrend rally in the Indian market, and from 7th of the April markets are showing high, and it's on uptrend basis. Daily we are making high trend, and so it's going up day by day. So आप लोग भी यूज करके देखिए आई नो फर्स्ट को एट जस्ट 799 पर मंथ। यूज कैसे करना है, और अगर कोई दिक्कत है तो उससे रिलेटेड मैंने मेल आईडी भी छोड़ा है beta.shunya.com पर। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी भी अदर इंफॉर्मेशन के लिए आप डायरेक्टली मुझे मेरे मेल पर भी रिवर्ट कर सकते हैं। थैंक यू अरुण सर, थैंक यू बैन फॉर कनेक्टिंग, and thank you for joining everyone. Thank you, Thank you Keshav. very much. Thank you. תודה רבה.